Hello everyone. So this is our fourth lecture on social issues, and in this lecture we'll be taking up the topic of effect of globalization in Indian society. This topic is actually present in your social issues paper 1. It forms part of your social issues section and it forms part of your paper 1. So everyone will be aware of this topic of globalization to some extent. Even you people also must have heard about this phenomenon of globalization because it's not a new phenomenon. Okay, as far as India is concerned and as far as the effect of globalization in India is concerned, you must understand that globalization is not a very new phenomenon. Globalization and the effect of global currents in Indian society, in Indian economy, and Indian polity and culture, they were always prevalent as far as India is concerned. So basically, we see that the globalization has phased up after the LPG reforms of 1991. It is said that globalization has phased up after the LPG reforms of 1991. LPG, you must understand the full form of LPG and you must have read about it, okay, in your economics lecture also, that what it is, LPG is all about. But even after the liberalization and private, even before the liberalization and privatization of the economies, if you consider history of India, you will always see that because India was not, first of all, India was under British rule for a long time. Before that also, there were, India was under the Muslim rule. So always there was influence of global currents in the Indian society. Okay, always. Whether it was during the British rule, because Britishers obviously they went for westernization of Indian society. Even before the in British rule, there was Muslim rule and all that. So always there were influences in the Indian society from outside. So and not just India, in fact all the countries of the world, even if they have started increasing their interconnectedness now, it's not that though the independence amongst different countries, interconnectedness has now phased up and it has increased a lot, and now the world has become like a small village. Okay, the world has become like a small village, that there is so much interconnection and interconnectedness between the different countries of the world, and it has increased to a lot of extent now. But even before the currents of liberalization and privatization, countries were influenced. Okay, the countries are influenced by whatever outside events that were happening outside their boundaries. Countries of this world were always influenced by each other. Okay, it's not that they were immune to the influences of outside currents that were happening. So you must understand that globalization is not a very new phenomenon. It is an old phenomenon. It was always present in the system of this world, and it has always influenced, that is, one country is always influenced by the events which are happening outside the country. No country is immune to it. Okay, now there are some countries who are very closed economies, okay, and so closed and socialist economies like Russia, China, etc. They are still not very much influenced by the global currents as far as their society is concerned, because they are trying to preserve their own culture and their own identity. But still, it has globalization has reached to such an extent, and it has enlarged its roots to such an extent that no country is immune from the events which are happening in the outside world, and every country in this world is affected by the events which are happening outside its boundary. So first of all, a little bit of background was essential, because I know that every one of you must be aware of this term globalization. Every one of you must have heard something related to globalization and its effect. The thing is that in this lecture we will be taking up each and every aspect of globalization and how, what are the pros and cons of globalization. There are negative influences of globalization also, negative impact of globalization also, and positive impact, and we will be studying it as far as the Indian context. Okay, only in the Indian context, that what effect globalization is having on the Indian society, because globalization is a worldwide phenomenon. Every country in the world is affected by this, but here our concern is to study globalization and its effect on the Indian society. तो हम इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में क्या इफेक्ट है इस ग्लोबलाइजेशन फिनोमेनन का. ठीक है, सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन इन वन वर्ड. अभी हमने एक बैकग्राउंड देखा कि
ग्लोबलाइजेशन कोई न्यू फिनोमेनन नहीं है, it's a very old phenomenon. All the countries of the world are influenced by the currents or global currents or events which are happening outside its boundary. Okay, so what is globalization? It is a process of increasing interdependence, interconnectedness and integration of economies and societies to such an extent that an event in one part of the globe affects people in other parts of the world. Like, if for example there is kind of a trade war, as you must have heard, trade war is going on between US and China. Okay, US is increasingly getting aligned towards, you can say, protectionist policies. Protectionist economic policies are the ones wherein you are trying to protect your industries, your economy against the outside influences. You are applying trade barriers and other sort of such इकोनॉमिक के जो मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रोटेक्टिव इकोनॉमी, जब आप प्रोटेक्शनिस्ट जो आप स्टेप्स लेते हो, उसके एक अलग टाइप के स्टेप्स होते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में. तो यूएस इज इंक्रीजिंगली गेटिंग अलाइन टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, एंड सो अ ट्रेड वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड चाइना. तो अगर ग्लोबलाइजेशन उस लेवल का आज के वर्ल्ड में नहीं हुआ होता, नो कंट्री वुड हैव गॉट अफेक्टेड, but half of the world's GDP is getting affected because of the trade war which is going on between just these two countries. So it is the impact of globalization only, that the economies, the polity, the societies of all the countries of the world are interconnected to each other to such an extent that any event in any one part of the globe, it affects people in other parts of the world also. If there is any part of the world which is facing any sort of problem, it is high chances that it will have its influence in other parts of the world also. Like for example, अगर वेस्ट एशिया जो है हमारा, वेस्ट एशिया है या मिडिल ईस्ट जो सिचुएशन होती है, वहाँ की जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, वो बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है. हमेशा टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं या वीक पॉलिटी की जो सिचुएशन है, वहाँ पे वीक पॉलिटिकल कंट्रोल वहाँ पे बहुत वीक है वेस्ट एशियन सोसाइटीज में, या जो भी वहाँ का कल्चर है या जो भी वहाँ के टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हैं. ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट अफेक्टिंग the West Asian societies only. Because of that and because of the problems which are happening in the West Asian and the Middle Eastern countries, there's a lot of effect which happens in the global oil prices also. Why? Because now all the countries of the world are interconnected. Okay, अगर कोई प्रॉब्लम वेस्ट एशिया सोसाइटी में हो रही है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं यूएस में भी पड़ेगा. यूएस में पड़ रहा है तो बहुत सारे वर्ल्ड के और भी इकोनॉमीज में पड़ेगा. तो इतना ज्यादा डीप लेवल का इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस और इंटीग्रेशन हो चुका है इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज का बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट any event in one part of the globe, it affects people in other parts of the world also. Like I gave you an example of US China trade war, and because of globalization, obviously it is affecting even more than half of the GDP of the entire world. Okay, फिर इस तरीके के और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ प्रेजेंट की बात करते हैं, तो अभी कोविड का सिचुएशन है. अब ये कोविड का सिचुएशन चाइना से ये दूसरे कंट्रीज में इतना क्यों रैपिडली स्प्रेड हुआ? बिकॉज समहाउ वी आर सो मच इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, इतना ज्यादा मूवमेंट है पीपल का, गुड्स का, एंड मटेरियल जो सोर्सेज होते हैं इनका इतना ज्यादा ट्रांसफर है, इतना ज्यादा मूवमेंट है पीपल का वन कंट्री से अनदर कंट्री में, कि इस वजह से इस तरीके के जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं या जो एपिडेमिक टाइप सिचुएशन होती है, वो इसीलिए स्प्रेड होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. इतना ज्यादा रैपिड लेवल पे इसलिए स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन हैज गॉट इट बोथ इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट ऑल्सो, नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो. Okay, and it means integration of economies and societies through cross country flows. Basically ho kyun raha hai? Because there is a cross country flow which is happening of information, ideas, technologies, goods, services, capital, even finance is moving, even people are moving. So people are also moving, exchanging ideas, exchanging capital, exchanging technologies, exchanging information, ideas, goods, services, capital, etc. So all this is happening, and it is showing that more and more integration is happening between economies and societies of this world. So basically this is the idea behind globalization, and ये हमेशा से ही है, but after the countries have got opened up economically, like for example China और ऐसे कुछ countries हैं, और like for example Russia before 1991 it was considered as a socialistic country, closed country. Okay, they are not open societies. Like US is an open society always, but China and other such socialist countries like Russia, even India before 1991, before the LPG reforms, we were also a closed economy only. हम बाहर से इतना ज़्यादा
इन्फ्लुएंस नहीं थे, बट व्हेन वी ओपनड आवर इकोनॉमी एंड हमने ये सारे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स किए हमारे कंट्री में, उसके बाद भी ओपनड अप मोर। ओपन सोसाइटी का मतलब यही होता है, या ओपन इकोनॉमी का मतलब यही होता है दैट यू आर इंटीग्रेटिंग एंड यू आर integrating with the outside world more. You are trying to increase more trade, you are trying to increase more movement of people, finance, capital, ideas, technologies, and more you are trying to encourage more free flow movement of people, ideas, technologies, goods, services, etc. between your country and between the outside world. So basically globalization पेस अप तो जो हुआ था हमारे कंट्री में 1991 के बाद ही हुआ, बट उसके पहले भी कुछ लेवल पे ग्लोबलाइजेशन ऑलवेज अफेक्टेड the Indian society. Okay, so it is the outcome of policies of liberalization and privatization. So we have studied about this, that's clear. It's an outcome of various policies that aim to transform the world towards greater independence and integration. So not just India, but it is those various policies which are actually transforming the world towards greater interdependence and integration. It aims to create a borderless world. So basically, this is the idea or a basic idea behind this concept of globalization. Okay, now we'll move ahead. What are the different kinds of globalization? Okay, so globalization takes form as financial globalization, economic level पे भी होता है, technological level पे भी globalization होता है, political globalization भी एक phenomenon है, और cultural globalization भी एक phenomenon है. Mainly इसके कहने का मतलब ये है कि globalization कौन कौन से aspects को touch करता है. तो financial भी होता है, because under globalization we know that there is more and more increase of a foreign investment in various countries. Okay, if like basically world is divided into two countries, एक तो होते हैं आपका रिच कंट्रीज या जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, एक होते हैं आपका जो कंट्रीज होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज होती है, एक होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, तो लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मेनली जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो लैटिन कंट्रीज हैं, या बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, और जब बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अगर आप बात करो तो एक होता है डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है ना, एक होता है अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड और एक होता है डेवलपिंग वर्ल्ड. सो लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग सोसाइटी. ओके, हमारा मिड में है, हम बहुत डेवलप्ड भी नहीं है और बहुत अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, तो डेवलप्ड है. पर अंडर डेवलप्ड अनडेवलप्ड में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, लाइक यूएस, यूरोप, जापान. ये जो सोसाइटीज हैं ये बेसिकली कहलाती है डेवलप्ड सोसाइटीज या डेवलप्ड इकोनॉमीज. ओके, अब लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत सारे लैटिन अमेरिकन या बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो बहुत डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कहलाते हैं एज फार एज देयर जीडीपी इज कंसर्न. इंडिया इज कंसिडर्ड एज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. ओके, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. तो हमारे यहाँ मेनली इंडिया हैज बीन अ वेरी मच mover of, you can say, globalization. India has played a very important role as far as globalization is concerned on a global stage. Okay, so financial globalization means free flow of finance or capital or free flow of foreign investment between the two different countries, or you can say इस तरीके से भी finance flow करता है कि development of new markets. Okay, that there are lot of MNCs और you can say multinational corporations हैं. MNCs का नाम आपने सुना होगा, अगर आप globalization के बारे में पढ़ रहे हो तो MNCs के बारे में तो पता होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे multinational corporations होते हैं, companies होते हैं who are boundaryless. Their domain, their working domain is not just limited to any one country. Like for example हमारे यहाँ इंडिया में अब आईफोन है और सारे जितने भी हम ब्रांड्स आजकल इंडिया में दिखते हैं वो सारे हमारे इंडियन ब्रांड्स नहीं है. दैट इज व्हाई नाउअडेज देयर इज मोर कॉल फॉर लोकल थिंग्स एंड लोकल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिकॉज अभी भी जितने भी हमारे कंट्री में भी ज्यादातर जो ऑपरेशंस वेल परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं. तो बेसिकली दे आर डेस्टिन्ड इन यूएस और अदर सच यूरोपियन कंट्रीज, बट दे हैव गॉट these countries or these MNCs, these companies have got their branches or operations in numerous countries of the world. So basically ये होता है MNCs का phenomenon that they are earning profits. Why? Because they are trying to form markets in the various developing and underdeveloped countries, because they have got resources. What these MNCs have got? They have got money, they have got finances, and they have got resources.
and these underdeveloped or the developing countries like India, they have got potential for huge market. Okay, because they are still developing, so there is a lot of demand which is there, and there is a lot of raw material which is present in these developing countries, and a lot of manpower, as you can say. So these MNCs, what they do, they hire this manpower which is present in these developing countries, and they establish their branches over here, because obviously there also a ready-made market for their finished products. So basically MNCs का functioning ये होता है कि अपने country, जो origin country destination country है, like for example आप iPhone का example ले लो, उनकी destination country US है, उसके बाद they have established their branches in various countries, and वहाँ पे वो operate कर रहे हैं by hiring the manpower of those different countries, by establishing their own markets in the different countries. तो MNC इसके थ्रू फंक्शन करता है, और इससे क्या हो रहा है कि दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन दीज डिफरेंट कंट्रीज. MNC के सिवा बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी होते हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को स्टैब्लिश करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, बिकॉज वहाँ पे एक रेडीमेड मार्केट उनको मिलता है, और बहुत सारे और भी फेवरेबल कंडीशंस की वजह से वो स्टैब्लिश करते हैं अपने आप को. तो ये जो एक फिनोमेनन है, ये होता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में भी वही सारी चीजें हो जाती हैं. मेनली मोर एंड मोर ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज होता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर. मोर एंड मोर पीपल का मूवमेंट होता है, आइडियाज का मूवमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होता है, because these developed countries, they are very much technological advanced countries, so they are sharing their technological secrets or technological expertise even with these underdeveloped or developing countries, so that they are also coming in pace with these countries, डेवलप्ड कंट्रीज. से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में वही सब कुछ होता है कि लिबरलाइजेशन कर दिया ट्रेड का, एंड बहुत ज्यादा फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ ट्रेड वगैरह हो रहा है, ये सारा हो जाता है आपका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में. ठीक है, दैट देयर इज नो बैरियर टू एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर, और या व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इन डिटेल वी विल स्टडी इन लेटर. फिर टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज का इंटरचेंज होता है. ठीक है, अब हमारा कंट्री में इतना ज्यादा रिसर्च डेवलप्ड नहीं है, तो जितनी भी R&D टेक्नोलॉजीज होती हैं, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, लाइक जो भी हम स्पेस के फील्ड में जो भी इंडिया एडवांसमेंट्स करता है, या इसरो जो, या DRDO जो एडवांसमेंट्स करता है, वो इसलिए करता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमने बाहर से इंपोर्ट करी हुई है. ठीक है, सिमिलरली एग्रीकल्चर की भी फील्ड की बात करें, सिंपल एक फॉर्म है एग्रीकल्चर का, ऐसे तो इंडस्ट्रियल भी बहुत होते हैं, पर एग्रीकल्चर में भी जो भी हमने एडवांसमेंट्स किए हैं अपने इसमें, वो हुआ क्यों, बिकॉज वी हैव समहाउ इम्पोर्टेड द टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, वहां से हमने इंपोर्ट करी है बहुत सारी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. फिर बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड जो सीड्स के वैरायटीज होते हैं, या एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से. तो ये एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने इंडिया में इज अ वेरी पावर हाउस ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. ओके, जो IT के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हमने डेवलप की, तो वो सब हमने कहाँ से इंपोर्ट करा, कहाँ से हमने सीखी वो सारी चीजें, टेक्नोलॉजिकल इनपुट, वो सब हमने बाहर से इंपोर्ट करके खुद भी फिर डेवलप किया उस चीज को. तो वो होता है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन. फिर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, like because of the increasing awareness, okay, because we are seeing that how the various countries of the world are managing their polity, how the various countries of the world are functioning, and they are maintaining their administration, their governance systems. So we are also kind of importing those political thoughts in our country. Like for example, increased awareness of people's participation, increased awareness for women's rights, increased awareness for, like for example, अगर ये नोटा वाला जो फीचर है आया हुआ है कि आप किसी भी पार्टी को वोट ना दो. ठीक है, ये जो नोटा का फीचर आया हुआ है, ये भी सारे आइडियाज हमने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के आइडियाज हैं, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट करते हैं कि बाहर के कंट्रीज में कौन कौन से पॉलिटिकल करंट्स जो चल रहे हैं, उससे वो हम, even the Indian society is getting influenced. Okay, and then cultural globalization. So cultural globalization, that the in what manner does this phenomenon of globalization affects the various cultures of the world. तो कल्चर में क्या हो रहा है, बेसिकली कल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो कल्चर का हो रहा है इंटरमिंगलिंग. ओके, इंटरमिंगलिंग हो रहा है. लॉट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ द वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ अदर कंट्रीज. Even they are imbibing those cultural influences in their own country also.
and they are also exporting some cultural ideas in other countries also. Like for example, अब हम कल्चरल डोमेन की बात करें तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा लेवल पे इन्फ्लुएंस हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन हुआ है इंडियन सोसाइटी का, एंड हमारा जितना भी क्लोथिंग का स्टाइल है या जितना भी हमारे फूड हैबिट्स हैं या जो भी हमारा आर्ट है वो सब कुछ इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं आउटसाइड वर्ल्ड से. नथिंग इज जस्ट प्योरली इंडियन नाउ, एवरीथिंग इज गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड. ओके, हमारा जो आर्ट फॉर्म्स है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस है, हमारा क्लोथिंग स्टाइल, हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारे जो फैमिली वैल्यूज हैं, इवन दोज आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड. लाइक फॉर एग्जांपल, पहले जो हमारे मैरिज वैल्यूज थे या जो हमारे फैमिली के जॉइंट फैमिली वैल्यूज थे और वो सारी चीजें थी, अब वो सब कुछ चेंज होकर न्यूक्लियर फैमिली में और इन सारे जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, इंडिविजुअलिटी पे जो फोकस है वेस्टर्न वैल्यूज का, एंड नॉट ऑन दी सोशल इंटीग्रेशन बट इंडिविजुअलिटी, उस पर बहुत ज़्यादा हमारा इफेक्ट पड़ा है एज फार एज द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर कंसर्न. ठीक है, फिर हमारा जो जॉइंट हमारा जो ये जो एक इंक्लिनेशन हो गया है टुवर्ड्स वेस्टर्न फूड लाइक चाइनीज फूड और अदर सच काइंड ऑफ फास्ट जंक फूड, ये बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ा है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के थ्रू. ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेरियस फूड जॉइंट्स या बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी चेन बाहर की है बट इंडिया में वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. तो ये सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी की वैल्यूज के ऊपर, वो होता है आपका कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन को. ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, सोसाइटी के भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, पॉलिटिक्स को भी ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है, एंड इकोनॉमी को तो करता है. फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज सीन इन द इकोनॉमी ओनली, बिकॉज इकोनॉमी में फ्री ट्रेड होने लग जाता है डिफरेंट सोसाइटीज के बीच में, और ज़्यादा एक्सचेंज होता है पीपल का, आइडियाज का, कैपिटल का, फाइनेंस का मूवमेंट होता है बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री. हम एड प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एड, किसी भी अगर डिजास्टर ऐसे किसी भी सिचुएशन में हम एक एड प्रोवाइड करते हैं. देन वी आर आल्सो टेकिंग एड्स एंड हेल्प एंड मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम इवन दी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक. ये जो फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ फाइनेंस हो रहा है, कैपिटल हो रहा है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, या यू कैन इवन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, ये सब क्या है? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली. ओके, now what are the impacts of globalization in India? So basically we will study about the impacts of globalization in full detail. हम various categories में करके पढ़ेंगे, बट अगर हम एक नॉर्मल इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें कि एक जो नॉर्मल की अगर हम एक पॉइंट वाइज पॉइंटर्स के थ्रू समझने की कोशिश करें कि एक ब्रीफ आइडिया लें कि क्या इम्पैक्ट होता है, कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट होता है, तो अगर इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है वेरियस गवर्नमेंट्स की टुवर्ड्स देयर सिटीजंस, दैट हैज इंक्रीज्ड. बिकॉज अगर हम देखते हैं कि यूएस में कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं या और कहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, तो हमें होता है कि हमारे कंट्री में भी वैसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, फिर टेररिज्म, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज गॉट पॉजिटिव इफेक्ट्स आल्सो एंड नेगेटिव इम्पैक्ट आल्सो. So what is one of the negative impacts of globalization? Terrorism. So it is because of कि इतना ज़्यादा free flow movement हो रहा है people का, and that is why even the terrorist ideologies, जो religious sentiments होते हैं या जो fundamentalist ideologies होती हैं, वो भी travel करती हैं from one country to another. Okay, and जो terrorism का इतना ज़्यादा flourish हो रहा है वो इसकी वजह से ही हो रहा है because of globalization. Because people and their ideas, even their fundamentalist ideas, they can travel in any part of the world because of globalization. इतना ज़्यादा interlinkage हो गया है, साइबर क्राइम्स जो इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, that is also because of the effect of one of the effect of globalization. ठीक है, so globalization actually यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी even this lecture that I will miss because globalization is such a, you can say, such a wide concept that आप उसको किसी एक फॉर्म में पढ़ ही नहीं सकते. Even there is not even a single definition of globalization. Globalization is such a wide varying concept that आप उसको किसी एक उसमें एक फिनोमेनन में, तो एक स्लाइड में या एक लेक्चर में आप समझ ही नहीं सकते पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन को. बट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम उतने ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे. बट इट्स अ वेरी वाइड फिनोमेनन एंड इट हैज़ गॉट मल्टीफेसेटेड, एक्चुअली इट्स मल्टीफेसेटेड. पूरी चीज़ें समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा. बट जितना ज्यादा हो सकता है उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो टेररिज्म पे भी इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबलाइजेशन का. जो टेररिस्ट आइडियोलॉजीज होती हैं या फिनोमेनन होता है, या इवन जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं
वो कभी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए ही प्लान किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपनी ही कंट्रीज में टेररिज्म होता है। टेररिस्ट अटैक्स हमेशा आउटसाइड वर्ल्ड या आउटसाइड इन्फ्लुएंस से ही किए जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। तो ऑब्वियसली दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ such an interlinkage between different societies of the world. So globalization का एक negative impact है terrorism. Then obviously shrinkage of the world because इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में इतना पेनिट्रेशन नहीं था टेलीकम्युनिकेशन का एंड मोबाइल फोन्स का एंड सच अदर टेक्नोलॉजीज का। इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी इतना ज्यादा नहीं था इंडिया में। बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन such the internet penetration even in the rural areas has increased. Even in the rural areas internet penetration has increased a lot and mobile phones telecommunication and such things have increased, जिसकी वजह से world has become a small village. आइडियाज अगर किसी भी वर्ल्ड में कोई भी इवेंट होता है उसके बारे में the ideas flow so quickly because of the deep penetration of internet and mobile technologies that world has actually shrinking world का phenomenon दिया जाता है ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन ने जो एक काम किया वो ये किया है कि it has shrunk the world and world has turned into a small global village। ठीक है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड होता है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं लाइक सार्क हो गया, एशियान हो गया, उसके थ्रू फ्री ट्रेड होता है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कैपिटलिज्म है बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली दैट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द you can say one of the parameters or one of the influences of capitalism only, because capitalism की ही ideology है, philosophy है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा free trade हो between two different countries and जितना ज़्यादा open economy हो और कहीं ना कहीं मार्केट कंट्रोल या गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, यही तो कहता है कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट जितना ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल लेस हो इकोनॉमी के ऊपर। एंड वही हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो प्रमोट हो रही है और दो कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड या फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो यही तो कैपिटलिज्म होता है। ठीक है, देन मोनोपोली ऑफ पावर। ओके, देन एनवायरनमेंट को बहुत एक आप तरीके से कह सकते हो कि एनवायरनमेंट के लिए वो दोनों वो चीजें हो रही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है क्लाइमेट चेंज इश्यूज को लेकर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है ग्लोबल लेवल पे। बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स या बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंसेस या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने, एनजीओज वर्क कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को बचाना कैसे है उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन ट्रेडिंग हो गया, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कार्बन ट्रेडिंग, सिक्वेंशियल ट्रेडिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं सो दैट इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। बिकॉज एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी एक कंट्री के फॉलो करने से नहीं होगा। all the countries have to cooperate with each other as far as the environment protection is concerned। ठीक है, तो environment protection के लिए बहुत सारे awareness भी generate करे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे organizations हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के भी हैं और वैसे भी ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट इनिशिएटिव्स हैं वर्ल्ड लेवल पे जो डिफरेंट कंट्रीज आपस में मिलकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट के लिए करते रहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट ऑल्सो। बिकॉज जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है और जो ये सारी चीजें होती है, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो भी इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए इतना डिमांड इतना बढ़ गया है बिकॉज सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड, तो ऑब्वियसली डिमांड इज इंक्रीजिंग टू सच एन एक्सटेंट कि उसको मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। प्रोडक्शन को इस एक्सटेंट तक बढ़ाया जाता है कि ऑब्वियसली इट डिप्लीट्स द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन रिटर्न। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहा है इकोनॉमीज का, ऑब्वियसली इक्वालिटी भी प्रमोट हो रही है बट इनइक्वालिटी भी प्रमोट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक रिच पुअर में डिवाइड हो रहा है, रूरल अर्बन में जो डिस्पैरिटी आ रही है बिकॉज ऑफ obviously it is the urban areas which are getting more benefits of globalization, and obviously that will increase the disparity between the rural and the urban areas of the country। और जो ऐसे कंट्रीज होंगे ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में, वहाँ पे ये डिस्पैरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी बिकॉज जो फ्रूट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो ज्यादा कहाँ पे है, अर्बन एरियाज में है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो दैट द अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज्ड। ओके, communication technologies have increased। Okay,
देन आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो गया है, ठीक है, आउटसोर्सिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ब्रांड्स के लिए जो हमारा एक मतलब इंक्लिनेशन है वो बढ़ गया है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है। पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉवर्टी रिड्यूस भी बहुत हुई है, एंड बहुत सारे कंट्रीज में पॉवर्टी इंक्रीज भी हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो व्हाट आर द salient features of globalization that we will study under the head of impact the globalization has on the economy of India? बेसिकली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री और ट्रेड और बिजनेस वेंचर विद इन देयर ओन कंट्रीज और अब्रॉड। सो एक जो लिबरलाइजेशन का ये जो एक phenomenon है, that is one of the feature of globalization, and वो कहीं ना कहीं impact है globalization का on the Indian economy also, that liberalization हुआ है हमारे country में, and the entrepreneurs have got freedom to establish any industry or trade or business venture even within their country or abroad. Then free trade हुआ है under globalization, the trade barriers have been minimized and there is more and more free flow of trade relations among all the nations, okay. तो ये एक हो गया चीज, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम्स आल्सो, दैट वी आर इम्पोर्टिंग आल्सो एंड वी आर एक्सपोर्टिंग आल्सो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री टू वेरियस अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिर क्या होते हैं, दे अक्रू मोर टू द डेवलप्ड कंट्रीज as they are able to expand their markets in their countries through the multinational corporations. MNC stands for multinational corporations. तो ये एक चीज है कि ये एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट है बेसिकली, कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द डिस्पैरिटी, ओके। देन इट क्रिएट्स एफिशिएंट मार्केट्स, ओके। आउटसोर्सिंग का फिनोमिनन हो रहा है। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी रिक्रूट्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज ऑफन फ्रॉम इवन अदर नेशंस। देन देयर इज एन इंक्रीज्ड कंपटीशन between the domestic production and the out the foreign companies के बीच में जो एक competition की spirit हो रही है as far as the product quality is concerned वो हो रहा है, ठीक है। liberalization of trade has happened, investment and capital flow is happening, so lot of investment is happening and even capital flow is happening. Liberalization of the domestic economy and enhanced incorporation of India with the global economy helped to step up the GDP growth rates also. So even this has also happened that जो liberalization हुआ है economy का और increased incorporation हुआ है इंडिया का global economy से, उससे कहीं ना कहीं हमारे GDP पे भी positive impact पड़ा है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो आउटसोर्सिंग है ये वेरियस एमएनसीज करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी एमएनसी क्या करती है कि थोड़े कम टाइम के लिए दूसरे कंट्री के जो मैन वर्क फोर्स है उसको हायर करती है, उसको ट्रेन करती है अपनी लैंग्वेजेस में, एंड वहां उनको इजियर या चीपर रेट्स में रिक्रूट करके अपना जो काम है वो उनसे करवाती है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग, ओके। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जितने भी आपके बीपीओज वगैरह जो हैं, ठीक है, ये बीपीओज वगैरह जितने भी काम करते हैं इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज ही इन्वॉल्व होती हैं एंड ये आउटसोर्सिंग के थ्रू ही ये काम करते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्योंकि फॉरेन गुड्स की जो क्वालिटी होती है इट इज वेरी मच एनरिच्ड, सो ऑब्वियसली द लोकल गुड्स या जो लोकल कंपनीज है दे आर फेसिंग अ काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन विद द फॉरेन कंपनीज, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट है ये है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के ऑन द इंडियन इकोनॉमी। We'll proceed with the other impacts and what are the other impacts of globalization in our next lecture. इकोनॉमी में भी देखेंगे हम, कल्चर में भी इम्पैक्ट देखेंगे, और हर एक जो इंडिया का हर एक मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का, ओके। सो वी विल कंटिन्यू with this topic in the next lecture.